Welcome back, dear AS. So we had studied about this graph. I hope it's fine. What we need to do today is exchange. So exchange between blood and body cells. Bismillah. अच्छा, आप लोग ध्यान कर रहे हो? Very good. नूर, आप हैं नज़ारा? I find you attentive today. Good. So देखिए, blood. This is when blood passes through, from aorta, blood goes into arteries. From arteries, that goes into arteriole. From arterioles, blood goes into capillaries. So this one is capillary, right? This one and this one, they are capillaries. So look, blood is entering. Got it? और ये जो capillary है ना, an arteriole breaks into capillaries. तो मुझे बताएं, artery aorta breaks into what? Arterioles. Artery, then it breaks into arteriole. Arteries split into arterioles. Arterioles into capillaries. Capillaries combine to make vein. मतलब to be precise, venules and then veins and vena cava. सही है? So capillary, this arteriole breaks into capillaries, and this so many capillaries are made from one arteriole. I just showed two. This is called capillary bed. What is it called? Capillary bed. At capillaries, what happens that from blood, some things go out, and from tissues, from cells, something go out. Can you tell me what goes out of blood? Oxygen, glucose, amino acid, fatty acid, glycerol. These things are, and water. These things go out of blood, so they could go to the cells. And from cells, what goes out? Urea, CO2. Look, you understand the idea? The job of blood is to supply good things to cells and take bad from cells, right? So, look at from capillaries, what goes out? Can you count some things which go out of capillaries? Mariam? Oxygen, glucose, no, CO2, oxygen, glucose, yeah, amino acid, no, water, fatty acid, glycerol. Achhi cheez. And what goes out of cells? Anyone? अब हमने बारियां लगाई हैं. Yesterday it was Meher to lead the आज Mariam. Okay, so from cells what goes out? CO2, urea thingy. So things which go out of cells and out of blood capillary together, ये वो जगह जहाँ मैंने कर्सर रखा हो. ये. This is called tissue fluid. So what is tissue fluid? It's made by the things coming out from capillaries and from cells. Noor बताएं, what is tissue fluid? It's made, she says, from things which come out of capillaries and from body cells. समझ आ गई बात? अब इस tissue fluid से क्या होता है? Which things go to the cells? Oxygen, glucose, amino acid, fatty acid, glycerol. All good things go to the cells, and bad things are picked up by what? Capillary. Got it now? Or they are carried away. So exchange occurs at dash bed. Capillary bed. Capillary bed. Very good. From capillaries, some things go out like what? Amino acid, oxygen, amino acid, fatty acid, glycerol, water. And from cells, what goes out is CO2 and urea. urea. Together, these things make tissue fluid. What they make? Sir, I have a question. Yes. All these substances like oxygen and all these also make tissue fluid, or only the substances which come out of the cells make up the tissue fluid? All what comes out of cells and from capillary, that makes tissue fluid. Okay. Tissue fluid is something made from things coming from capillaries and from body cells, right? मैं समझ रही हैं आप? Yes, sir. Look, why do cells
send out things so that they could be carried by capillary. And why capillaries send out things so that they could be carried by cells. cell. Yes or no? So the exchange occurs at capillary beds, oxygen, glucose, amino acid. I mean, all good things, food wara, jo blood leke aata hai. They go out from capillary to the tissue fluid. And CO2, urea, etc. go out of cells to the tissue fluid. So they make tissue fluid. Then later on, oxygen, glucose, amino acid are taken up by the cells. CO2, urea is taken up by capillary. But some things remain here. They remain unexchanged. Got it? समझ रहे ना कुछ चीजें यहाँ रहती हैं. So they can be pooled. I mean, look, this place, they'll accumulate here. So here comes another type of vessel called lymphatic. So lymphatic is like, arteries originate from aorta. Yes or no? Arterioles start from Arteries. Aorta. artery. Arteries from aorta, arterioles from artery, and dash. No. Capillaries from arteriole. Capillary from arteriole. Very good. And veins from dash, Mariam. Capillaries. Very good. And vena cava from veins. All veins together, vena cava. But there is another type of vessel, another type of tube called lymphatic. What? The one drawn in blue. They originate from capillary bed. Beta, they start at capillary bed. And their job is to drain the tissue fluid. What's their purpose? Drain. The drain means their job is to remove the tissue fluid which could not be exchanged between blood and cells. Yes or no? Yes, sir. If lymphatics do not work well, tissue fluid will be pooled here. It could lead to a sudden death, by the way, edema. It's not in our course, but edema is when pooling of tissue fluid. So lymphatics, अब कितने fluid इस picture में आपको नजर आ रहे हैं? How many fluids you can see in this picture? 3. 3. Very good. Number 1 is blood. Number 2 is number 1 is blood. Tissue fluid. Number 1 is blood. Number 2 is tissue fluid, and the 3 is Number 3 is lymph. Number 3 is what? lymph. Lymph. Yeah. Am I sharing the screen? Mariam, आपको समझ आ रही बात? नूर समझ आ रही? How many fluids? 3. 1 is blood in the vessels because we are closed. The other is tissue fluid and between the cells. And the third one is lymph, which is in the lymphatics. Done? Sir, I have a question. Please, एक second. Ji, Noor, what are lymphatics? Look, lymphatics are, yes, will anybody tell us what are lymphatics? They originate from capillaries and they drain out the remaining tissue fluid from the What are lymphatics? Miss Noor, lymphatic is like artery, vein, capillary. They are also a type of vessels. But, arteries originate from aorta. Yes, no? Capillaries originate from arteriole. But lymphatics originate from no one. They start from tissue fluid. इनकी यहाँ से ही beginning है. And lymphatics, lymph vessels, they drain the tissue fluid. और मेहर आपका क्वेश्चन है बस एक सेकंड मैं कह रहा हूँ 3 फ्लूइड है. एक वो है जो ब्लड है कैपिलरी में, एक ये टिश्यू फ्लूइड है और एक लिम्फ है जो इसमें है. तो 3 fluids differ in their location. Yes or no? Ji, what was your question? What was your question? Okay, sir, where you're having the cursor? Sorry? You're having the cursor on the above blood capillaries. Can you see those circles you made? These are body cells. Yes. Is tissue fluid also present there? Yes, yes. देखें मरियम मैं ये कह रही है ये सारे बॉडी सेल्स ये वाले capillary is so narrow that it can penetrate in between the body cells, right? So they all are body cells. From body cells goes out something, from capillaries goes out something. So here also is the tissue fluid. In fact, tissue fluid is what is found in between the cells.
The other name for tissue fluid is intercellular fluid. Intercellular. मरियम आप समझ रही हैं या कुछ और कर रहे हैं? आप मुझे बताएं, how many fluids in the picture you can see? 3. And these fluids differ, I repeat, these fluids differ in their location and in their composition. Where is lymph found? It is found in the lymphatics. Where is tissue fluid found? It's found in between the cells. And where is capillary, where is blood found? It's found in the capillaries. Done? So the three Yes, sir. fluids differ in their composition and location. Now let's look at what is the difference of their composition. Composition का फर्क है कि इधर RBCs होते हैं, यहाँ पे नहीं, इधर भी नहीं. Capillaries have red blood cells, but not in this tissue fluid and not here. Done? Yes, sir. Then there are big proteins, plasma big proteins. They are found in capillaries, but not here, not here. लेकिन जो white blood cells हैं, they can squeeze through this. कैपिलरी के पोर से वो बाहर आ जाते हैं, स्क्वीज होकर. तो व्हाइट ब्लड सेल्स इधर भी होंगे. आप उधर लिम्फेटिक्स बाद में, so many lymphatics from different body parts, they join to make lymph node. There's no picture for this. Sir, can Beta you repeat lymphatics which join to make what? can- Lymph node. देखें ये. और ultimately they'll throw their materials into what? Vena cava. Before the blood enters the right atrium. अब अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आपको इधर ही रोकना चाहिए मुझे, तो बेटा, ताकि आप फिर भाई, मैं कह रहा हूँ बिफोर फ्रॉम होल बॉडी ब्लड विल रीच टू वीना cava. यस और नो? तो ये जो जिन्होंने जो लिम्फेटिक्स है ना बेटा, दे थ्रो देयर लिम्फ इनटू व्हाट? वीना cava अल्टीमेटली. तो देखो ये एक Sir, can लिम्फेटिक है, you ये एक again और repeat लिम्फेटिक, it? ये एक और लिम्फेटिक है. एंड व्हाट इज दिस इन द मिडिल? हेलो, lymph Sir, can you- node, and this is a bigger lymphatic. So lymph which travels through lymphatics, lymph vessels, it is also thrown into vena cava ultimately. याद है vena cava पूरी बॉडी का जो ब्लड इसमें जाता है. तो ये lymph node में एक और काम भी होता है बड़ा इंपॉर्टेंट. lymph nodes are where lymphocytes are made. आपको याद है lymphocyte का शक्ल कैसे होती है? यूं, one big nucleus with clear cytoplasm, no glands. So I have drawn lymphocyte. Yes, no? नूर, ये मैं कौन सा सेल बना रहा हूँ? ये देखें, ये एंड ग्रैंस, फेगोसाइट, न्यूट्रोफिल. और ये मैं कौन सा बना रहा हूँ? ये डेंटेड न्यूक्लियस, मोनोसाइट. मोनोसाइट, मोनोसाइट, ये हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी में. Sir, यस, can you repeat which substances can penetrate through capillaries and they enter to the tissue cells? सॉरी, Can you repeat which substances can pass through the capillaries? As you said, red blood cell yes, protein. I can. Let's repeat it together. Exchange occurs at capillary bed, right? Can you read with me? Exchange occurs at capillary bed. CO2, urea, and other waste go out of cells. Yes or no? Yes, sir. Oxygen, glucose, amino acid, water, salts, fatty acids, glycerol, they all go out of capillaries. Yes. मैं आपसे शेयर कर देता हूँ. Things which cannot come, things which came out of capillaries and body cells make up tissue fluid. Oxygen, glucose, amino acid, etc. go from tissue fluid to the cells. CO2 and urea, etc. go from tissue fluid to capillaries. Unexchanged, leftover substances are picked up by lymphatics. This prevents pooling of the tissue fluid, which can result in the death. With this we mark ending of this chapter. आपको पता है हमारे इस चैप्टर के हैंडरिटन भी है, वो मैं आपको भेज दूंगा. लेकिन आप मुझे ये बताइए, ओह माय गॉड, ये तो मैं आपसे बेटा, एक्सचेंज में एक चीज और हमारे माइंड में निकल गई कि लिम्फोसाइट्स आर मेड हियर एंड आल्सो एंटीबॉडीज. दो चीजें यहाँ लिम्फ नोड में बनती हैं, एंटीबॉडीज एंड
lymphocytes. So, you know, antibodies are proteins. Globular या fibrous? Fibrous. Any guess? आप बताएं. Globular या fibrous? Globular. जितने भी functional proteins हैं, enzymes, hormones, antibodies, they are globular. और जितने भी structural protein हैं, like what? Structure कौन सी होती है? Hairs. मैं बोलता हूँ, आप guess करें. Are these structural या functional? What is your guess? The proteins which make hair, Globurous. teeth, structure, teeth. नहीं, body का structure बना रहे हैं फंसे. Bones, skin, arteries, veins, structure. They all are globurous. They all are structural protein, and they are fibrous. They are what? Fibrous. Muscles को जो protein बनाते हैं वो भी structural हैं, और जो functional हैं, they are globular. Globular समझते हो? Spherical. 3D, spherical, like enzymes, hormones, antibodies, right? So antibodies are made in the lymphocyte. Where are antibodies made? Lymph node. So यहाँ जो lymph है इस जगह पे, will that have antibodies or not? Because they are made in the lymph node, ना? Yes, Meher. क्योंकि देखें यहाँ lymph node में antibody बनते हैं ना, तो फिर इस जगह पे antibody नहीं होंगे. Yes, इस जगह होंगे. नहीं दिखली जगह. क्योंकि यहाँ से आ रहा है, so many lymphatics through here, और lymph node के बाद एक और lymphatic जा रही है, बड़े वाली. Some a little challenging questions today, but so what do you think? What is a difference in white blood cells? Hello, dear students, आप देखते हो blood, white blood cells जो है ना, blood में हैं और tissue fluid में भी है और lymph में भी है. क्यों? Any explanation? So did you teach about the white blood cell and red blood cell? I can repeat, but look. Okay, do white blood cells leak out of capillary bed? Yes or no? Yes. अभी हमने बड़ा सा देख, मतलब from capillaries, RBCs पास करते हैं बाहर? No. No. आप लोग ध्यान दे रहे हैं? And but WBC, white blood cells, can squeeze through capillaries. नहीं, ऑक्सीजन ग्लूकोज वगैरह के साथ, या RBC नहीं जाते. Only WBCs can squeeze through. तो सब अगर ब्लड में ज्यादा WBC होंगे या टिश्यू फ्लूइड में? टिश्यू फ्लूइड. महर क्या होगा बेटा? ब्लड में ना, क्योंकि थोड़े बहुत white blood cells can squeeze through the gaps of capillary cells to tissue fluid. So there will be more in the blood, less in tissue fluid. Yes or no? Yes, sir. जागे ना. और लेकिन सबसे ज्यादा इधर क्यों होंगे? lymph में. Why white blood cells are there in the lymph? Because when they penetrate through the capillaries, they enter the tissue fluid, and when limbs they take No. इधर I am not able to tell you. ये आप समझ नहीं रहे बेटा. देखो ये कैपिलरी है, ठीक है? कैपिलरी से थोड़े बहुत white blood cells squeeze करके यहाँ आते हैं. So if I ask you between blood and tissue fluid, which place has more white blood cells? जल्दी बताएं. Blood. From blood, few white blood cells also, along with oxygen, glucose, whatever, can squeeze through capillary gap and come to tissue fluid. So blood will have, capillary will have more, blood will have more, and tissue fluid will have less white blood cells. Yes, no? You clear? Yes. मरियम समझ आ रही है? But lymph will have most. Why? ये वाला lymph, ये, because they are below. Lymphocyte is a type of white blood cell. Yes or no? And where are they made? Lymph nodes. So if I ask you why lymph has white blood cells, आप क्या कहेंगे? Because they are made in the lymph node. Lymph. Initially तो bone marrow में बनते हैं, लेकिन lymph node में वो mature होते हैं. Sir, I'm trying to ask you, did you teach what's the function of white blood cell and red blood cell in any class this session? Yeah, we'll definitely discuss them. They're coming up.
Okay. अब मुझे आप बताओ बच्चों, यार प्लीज मोबाइल छोड़ने में आप लोगों को रिक्वेस्ट करो, आपकी क्लास में लिमिटेड टाइम की होती है। अच्छा मोबाइल से आप शायद लॉग इन है, तो आप मुझे बताएं वेयर आर मोर वाइट ब्लड सेल्स, ब्लड या टिश्यू फ्लूइड में, वेयर शुड बी मोर? ब्लड। Blood. पता है आप ध्यान देंगे ना तो हम रिपीट नहीं करेंगे फिर। बट मोस्ट इन द लिम्फ, यस नो? अब इसका आंसर बताएं, वो कह रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंस, व्हाट्स द आंसर? As white मैं blood बोलता cell हूँ are आप बताएं। हम कहेंगे टिश्यू फ्लूइड हैज लीस्ट नंबर ऑफ WBC because few can squeeze from that, squeeze out from that. capillaries. थोड़े बहुत कैपिलरी से निकल जाते हैं, राइट? बट lymph has most because lymphocytes are made in the Lymph lymph node. node. नूर lymphocyte white blood cell है ना, समझ गए आप बताएं why lymph has most? Because lymph node is The lymphocytes has are made in the lymph node. lymph node यार। अच्छा जी, अब आप ये बताइए मिस, RBC should they be more in blood या tissue fluid? Blood. Why? Because Because they can they cannot squeeze through capillaries. They cannot they squeeze cannot through penetrate capillaries. from capillaries. Very good. और मरियम बताएंगी ग्लूकोज। अच्छा ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा होगा या टिश्यू फ्लूइड में या लिम्फ में? देखो इस डायग्राम पे हम वापस आ जाते, देखें ब्लड से ग्लूकोज बाहर आया, यस नो? Yes, sir. ब्लड से ग्लूकोज इधर आ गया, फ्रॉम हियर ग्लूकोज वेंट टू व्हाट? सेल्स। Tissue cells. ऑब्वियसली या लिम्फ में तो थोड़ा सा होगा, so from blood came to tissue fluid, but from tissue Transported. fluid much of it is picked up by cells and what is left is taken by lymph, right? नहीं समझ आ रही? Where are RBCs? Do they go out of capillary, Mariam? No, sorry, glucose की बात होगी। तो glucose does it go out of capillary? Yes. Yes. तो वो लेकिन वो टिश्यू फ्लूइड से कहाँ जाता है? सेल्स में ना। तो लिम्फ में कम होगा ज्यादा होगा ग्लूकोज? कम, Less यही वो कह रहे हैं। because तो आप कहें बिकॉज all the glucose goes from blood to tissue fluid, from tissue fluid to cells, so lymph has less. नूर समझ आ रही है? अच्छा प्रोटीन का आप बताइए, why is there very less number of protein in the tissue fluid? protein cannot penetrate through blood Very through good. capillary Proteins are too big to cross the capillary, so they are not found in the tissue fluid. But why are there They- many proteins in the lymph? because in lymph node the proteins are antibodies are globulin. Wow, impressive. मैर हमें बता रही है because in the lymph node, आगे lymph node में क्या बनता है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी इज अ प्रोटीन। नूर, why lymph has proteins? Because it's having antibodies. क्योंकि lymph node makes, नहीं वो तो ऊपर था ना वाइट, ये वाले एंटीबॉडी which is a protein. So look, protein in the lymph is more. Done? Yes, sir. Yes. Order. Hello. Which event is Yes, first? sir. तो बहुत देर लगा रहे हैं आप। देखिए कल हमारी पूरी क्लास पे डेडिकेट हुई थी बेटा। व्हाट इज द फर्स्ट इवेंट? Atria contract. यार नहीं, एटीआर नहीं, एटीआर नहीं। Atria. No, it says atria send away. Sir, the मरियम, last one. सॉरी, वेरी गुड, वेरी The गुड, दिस second वन event, इज वन। the last one. This one's the one. Then the second one is atrioventricular node send out a wave of. नहीं, सेकंड इज एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट। नूर, वेरी गुड नूर। देखो एस से एन होता है, स्प्रेड कर दिया है ना, देन एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट है ना, Yes. then AVN node, AVN AVN. sends out wave of excitation down to what? Purkinje tissue, carry it down. And then ventricles contract. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो आप बता रही है ना उसको यहाँ से आप देख सकते हैं। एक्सक्यूज मी,
SN initiates the wave of current. Am I visible? SN से current travel होता है, right? ये हमने सही किया था. Spreads to both atria. So atria contract. Yes or no? Then this Yes. current reaches the AVN. नूर समझ आ रही बात? AVN delays, stops further passage for few seconds, milliseconds rather, milliseconds. Then message goes down towards the base of heart. याद है? नहीं याद आ रहा? Base of heart, and insulated manner. So no leakage. At the base of heart, perkined tissue releases the current, and ventricles start then contracting. So what do you think about this question? SAN sends out excitation, जैसे आपने कहा, atria contract. Number 3 is AVN will send the current down. Perkined tissue takes the current wave of excitation. So, पता ना? And then atria ventricles contract from bottom to up. Any problem? Yes, no? नहीं समझ आई? आ गई समझ. आपको नहीं आ रही? नहीं बताया किस में? अच्छा, okay. Explain the difference and the thickness of the wall of left and right ventricle. Easy है ना? Yes, sir. Because sir, right ventricle, the left ventricle has to Left transport blood ventricle to has thicker wall because it has to send blood to whole body at greater pressure. the But right will have to send it to heart at low pressure. So no to the lungs. हाँ, to lungs, yeah. ये हम पढ़ चुके हैं. ये जो है ना, ये कैपिलरी है, पता है? कैपिलरी सिंगल सेल थे क्या मल्टी लेयर्ड? और कैपिलरी के सेल्स फ्लैट भी होते हैं. लेट्स लेबल दिस बाय द वे टुगेदर. अब मैं इसमें रेड कलर लेता हूँ. आप मुझे बताइए, मैं जो बनाऊंगा आपने इसका नाम बताना, ठीक है? व्हाट इज दैट? हेलो? No, red versus. So they are RBCs, right? The one in red are red blood cells. अब मैं एक और सर्कल करता हूँ, आपने मुझे बताना है इसका नाम. Hello, what is this? देखो ये पूरा जो ब्लू है, वो जालिम, ये एक सेल है बेटा. नूर आप ऑनलाइन नहीं और मोबाइल यूज करिए बेटा. देखो मेरे बात करूंगा फिर आप फ्रेंड होते हैं और मोबाइल उल्टा करें. देखें ये जो है ना, दिस इज वन सेल. इट इज व्हाट? सेल, epithelial cell, the one that makes boundary of the capillary. और फिर एक और सेल में बना रहा हूँ. नहीं समझ आ रही? ये देखो एक सेल है, ये पूरा यहाँ से यहाँ चल ही रहा है. इट इज जस्ट वन सेल. अब आप मुझे बताएं व्हाट इज द, ये भी सेल है. तो अब जो मैं ग्रीन से कर रहा हूँ वो आप मुझे बताएं व्हाट इज दैट थिंग. जस्ट ये कैपिलरी का जो वॉल है, कैपिलरी सिंगल सेल थे. तो बच्चों ये ग्रीन में क्या है? ओहो, दे आर न्यूक्लियस. महर नहीं समझ आ रही? हाँ ये सर, तुम पहले कभी नहीं किया तो. आई कैन नॉट हियर यू. ये देखें, ये एक सेल, मरियम, ये बाहर वाला सेल एक सेल है, फिर ये दूसरा सेल है, और ये उन दोनों के ग्रीन में न्यूक्लियस है, और बीच में आरबीसी है. और ये हमें नूर बताएंगी ये वाली चीज. व्हाट इज दैट? पी से टिश्यू फ्लूइड. प्लाज्मा. प्लाज्मा मींस ब्लड. डन. यस. सो नेम सेल्स ए एंड स्ट्रक्चर बी. अब मैं रेस करता हूँ और आपने जल्दी से इसको लेबल करना है, जल्दी से प्लीज. A is epithelial cell and B is nucleus. कोई और बताएगा ए एंड बी क्या है? वो सर्वल कैपिलरी में कहाँ आई? ए जो है ना क्या है? Epithelial cell. एंड बी? Nucleus. Nucleus. Explain how capillaries are adapted for their function as exchange. They are single cell. Capillaries are single cell. Single cell thick.
which helps in penetration of substances. Single cell thick. Why? To dash the distance. To decrease the distance. अब तो shorten है ना? To dash the distance for exchange. Number one. Number two, squamous, mashallah, flattened. Capillary cells are flattened. This is very, very important to remember, please. Squamous. To increase the surface area. Yeah, ये यूं होते हैं यूं. Squamous, flattened to increase surface area. So please share today's recording in the group. जी आई डेफिनेटली डू. ये बीच में पंखे की आवाजें ये इसको नंबरिंग कर सकते हैं आप? हेलो. Yes sir, एक पकड़ लें. अच्छा अभी टाइम है. The first sinoatrial node sent out impulses. यार कसम से. हाँ, जल्दी बोलो. The first sinoatrial node sends out pulses. This one at first. Yes. Next. रुके मैं इसको ए बी करता हूँ. ए बी सी डी ई एफ. अच्छा बताएं एफ इज वन. So impulses travel across the atrial रुको walls. सी क्या? टू. गुड. टू. C2. Then Impulses over the atrioventricle. B is third. Then E. नहीं मैं सोच रहा हूँ सही है गलत है. आप बताएं प्लीज बताएं. Then E is fourth. एक मिनट. No. Yes. Then impulses A is fifth. Then what? A. मुझे लगता है ये है ना. आप सही कह रहे हैं. सर A भी है ना? या Sir. ये 4 है और ये 5 है. Yes sir. No, that's 5 and then. सॉरी. देखें बंडल ऑफ फेस उन्हें नीचे लेके जाएगा. तो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेंस पल्सेस और दे आर सेंट डाउन. Yes. ठीक है. दे रीच टू द बेस ऑफ हार्ट एंड देन दिस. रुकें इस डायग्राम को देखें आपको समझ आ जाएगी. ये वाली देखो. सर आ गया. समझ है ना? Yes sir. नूर ये जो नीचे लेके जा रहा है ये क्या है? बंडल ऑफ फेस. और जो वेंट्रिकल की वॉल तक कर रहा है वो क्या? मरियम साथ साथ इंस्टाग्राम यूज कर. इंस्टाग्राम. अच्छा तो यहाँ मुझे बताएं एस एन बोथ एट्रिया एवीएन एंड डैश बी से. Bundle of S. बंडल ऑफ हिस. और नूर आप बताएं ये क्या है? ई से. परकाइन टिश्यू. बंडल ऑफ हिस. HIS. तो ये हमारा थोड़ा सा थ्योरी का रिकैप था. सीओपीटी तो अभी कोर्स से निकल चुका है. आप मुझे आर्टरी का कोई स्ट्रक्चर और फंक्शन बताएं. Sir, artery are having narrow lumen to increase the pressure. Arteries have narrow lumen so that they have more pressure. अब कोई और आप बताएं आर्टरी का. रुको मैं जी आप अभी क्या ही पकड़ें. आप बताएं. Dash wall, thick wall to prevent bursting. और एक और dash wall E से. Elastic wall. To dash the blood pressure E से. Even out blood pressure. नहीं इसको रीड करें आ जाएगा. वीडियो में आपसे शेयर कर दूंगा कल वाली. कैपिलरी का फीचर दिया कि दे हैव डैश सेल्स F से. Flattened cells. One cell thick, so less distance for exchange, and they are flattened. And so squamous. Flattened में surface area for exchange increases. ये आपने घर पे दिमाग खपाई करनी है. काफी हेक्टिक है.
Why transport? This is something very important. देखो आज हमने MCQ से पहले थ्योरी किया है, because MCQ becomes friendly. इसमें कुछ outdated questions भी हैं. This chapter is an important topic. By the way, it took us 2 weeks to finish up, you know? It took more time. Yeah, why is there a need for transport system in multicellular plants and animals? I think I need your very good. Yes. Please. Yeah, we need to be, let's understand the idea of why multicellular organisms need a proper transport system. आपको मैं एग्जांपल देता हूँ. अगर आपने ज्यादा चीजें यहाँ से लेके जानी है, एक चेयर उठानी है, तो यू डोंट नीड अ कैरेज सिस्टम, यस और नो. लेकिन अगर बहुत सारा सामान लेके जाना है और बड़े डिस्टेंस तक लेके जाना है, तो यू नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यस नो. Yes. अब अगर मतलब we have to carry so much luggage to a greater distance. So in the same way, multicellular organisms need a proper transport system. What are the arguments that you need to bear in mind? Number one, multicellular organisms are multi-layered. जब अगर आप वीडियो को प्ले करते हैं ना, तो उसको पॉज करके ये पॉइंट्स आपने लिखने हैं कि multicellular organisms are what? Multi-layered. जैसे यूनिसेलुलर क्या होता है? बैक्टीरिया इज यूनिसेलुलर, तो वो बिल्कुल एक सेल है इस तरह. तो आप देखिए कि उसमें लेयर्स नहीं है. मल्टी सेलुलर इज मल्टी लेयर्ड. सो द लेयर्स बीनीथ, लेयर्स द वंस डीप डाउन कैन नॉट टेक अप थिंग्स ओनली बाय डिफ्यूजन. सो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज नीडेड टू कैरी थिंग्स टू देम. नहीं समझ आ रही? Understood, sir. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मल्टी डैश, multi-layered. So layers beneath, layers deep down, बेटा समझ आ रही है? Layers deep down cannot receive things only by diffusion. So a proper transport system is needed. This is one point. मतलब मैं फिर आपको बता दूं कि बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है यूनिसेलुलर, तो इसने कुछ चीज लेनी है तो डिफ्यूजन से इसमें आ जाएगी और यहाँ से निकल जाएगी बाहर. बट सिंस वी आर मल्टीसेलुलर, वी आर मल्टी-लेयर्ड. तो देखो ये मल्टी-लेयर्ड होने का मतलब क्या कि ये ऊपर वालों को तो डिफ्यूजन से मिल जाएगा, नीचे वाले जो है ना उन तक वो नहीं पहुंचेगी चीज. सो layers beneath cells deep down cannot receive things by only diffusion. Done. The second thing is multicellular organisms need to carry large amount of things, like large amount of oxygen, glucose, CO2, urea. So they need a proper transport system. And number 3, less than a minute is less. Third thing is multicellular organisms need rapid delivery. Rapid? पहले होता था आपने किसी को कोई मैसेज भेजना तो pigeons would carry the message, महीने लग जाते. तो अब rapid, देखो जब आप लिख रहे हैं तो these muscles need rapidly delivering oxygen and glucose must be delivered rapidly. So we need a transfer. Rapid delivery, larger amount and multi-layered. Bye bye.